recording. थोड़ा ध्यान दिया करो, अगर भूल गया तो बताया करो मेरे को प्लीज. Okay, so I'll repeat here. So we have feed, which is a liquid at its boiling point, which comes here, enters the distillation column, and the pressure of the feed is slightly more than that of the distillation column. So when it enters the distillation column, it separates into two phases, liquid and vapor. The vapor goes up and the liquid comes down. The vapor rises to the column to the top. It is condensed in the condenser, and this is liquid. Liquid is partly sent back to the column as a reflux, and partly it is taken out as a product. So this liquid is coming down from the column, and the vapor is going up in the column. And on the tray there's always liquid on the tray, and the vapor is going through the holes in the tray. So on this tray, each tray, the liquid and the vapor come into contact with each other, and mass transfer happens on the tray, and this liquid and vapor, they are in equilibrium with each other, and that's why we are studying vapor liquid equilibrium, because that's most important thing for distillation column. And what comes out at the bottom is this liquid is taken out as a product, bottom product, and then it is, the boiler is actually vaporizing it. So this vapor comes out back and it is sent back again to the column. So this is the functioning of a distillation column. Any questions on distillation column and vapor liquid equilibrium? Why we are studying vapor liquid equilibrium? No questions? Okay. If there are no questions, then let's proceed to the next topic. We are going to look at constant pressure equilibria. As I said, our distillation or chemical processes or unit operations are mostly at constant temperature and pressure. So we'll look at constant pressure processes first, and then define how do you find the BLE, right? So if you consider a binary system, two components, and we have two phases, vapor and liquid. So C is equal to 2 components, and phase is equal to 2. So F is equal to 2, right? So degrees of freedom is equal to 2 for a binary system of two phases. So the pressure is fixed, the constant pressure. Only one variable, that is liquid composition, can be changed independently, right? We have seen Duham's theorem, right? Duham's theorem says that minimum two intensive and right? And our phase says the degrees of freedom is defined by F is equal to C plus 2 minus P for intensive properties only. So what we are seeing is for properties F is equal to 2, and if you fix a parameter specified, the whole system is that understood. Any questions on this? Okay, no questions. Then let's proceed. So we'll see VLE data at constant pressure. They are represented as temperature composition diagram or TXY diagram, or also called boiling or distribution diagram, which is XY diagram or equilibrium diagram. So let us look at TXY diagram. So if you plot temperature on the y-axis and mole fraction on the x-axis, mole fraction of liquid and vapor, x and y both of A.
and A is always taken as more volatile. What is more volatile component? Less Low boiling. boiling. Low boiling component, right? So we always take more volatile component. That means the boiling point is always less. So if you look at this y-axis, this is the boiling point of A, which is less than the boiling point of B, right? So A is more volatile component, right? So now if you plot temperature versus x and y, we get curves to this one, which is temperature and y curve. So y-axis on the x-axis. Our curve is Tx, which is temperature on the y-axis and x-axis. X is more fraction liquid सर वॉइस सर and y is वॉइस ब्रेक हो रहा है. more fraction in the y vapor. हेलो. Sir, you are not audible. Hello. आवाज नाही येते पण या सरांचा. Okay, can you hear now? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, internet quality is poor, so we have to live with. आवाज आ रहा है अभी ना? Yes, sir. Okay. So if you take this upper curve, this is Ty curve, temperature versus mole fraction in the vapor phase, and this is also called dew point curve. And the lower one is called Tx curve, or temperature on the y-axis, and mole fraction in the liquid phase on the x-axis. And this is also called a bubble point curve. What is bubble point? याद है किसी को? बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट क्या है, किसको याद है? किसी को याद नहीं है? मेरे पीसी में पढ़ाया था ना रितेश? Bubble point is boiling point of mixture of solution. Temperature at which the mixture starts to boil. Yes, sir. Yes. Bubble point is the temperature at which the first bubble of vapor is formed when you increase the temperature of the liquid. That is why it's called bubble point. Bubble जब निकलना शुरू होता है तो उसको bubble point बोलते हैं. वेपर फॉर्म करना शुरू होता है. And what is dew point? कंडेंसेट होना स्टार्ट होता है. Yes. So if you take a vapor and you start to cool the vapor, तो as a first drop जब होता है liquid का, when the first drop of liquid appears, when you start to cool the vapor, that temperature is called dew point. Right? So if you go early in the morning outside in the winter, and very early in the morning, and if you see leaves on the trees, what is there on the leaves? What will you find on the leaves? Water drop. Droplets, Water sir. drops. Where does water come from? Where does that water come from?
Due to condensation. From से atmosphere. condensation. Because रात को टेम्परेचर कम हो जाता है तो वेपर becomes super saturated and then the excess vapor starts to condense from the air, and that's what you see in the morning. That's why it's called dew, right? Dew drops बोलते हैं ना उसको हम, and that's why this is called dew point also. Okay, so if you take this curve and if I start from say x1, if I start from say take any liquid composition x1, okay, and I increase the temperature, right? Take the liquid X and suppose I increase the temperature of this liquid, right? So at this point, the first bubble will start forming, right? At point B. This curve is bubble point curve. So at this point, the first vapor bubble will start appearing. And if I increase the temperature further, or if I increase the temperature either, if I increase the temperature further, then it will become थोड़ा लिक्विड और थोड़ा वेपर रहेगा, इन दोनों के बीच में लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर रहेगा, एंड एट दिस पॉइंट वी विल हैव ऑल वेपर. ड्यू पॉइंट के टाइम पर इट विल बिकम ऑल. सो बिटवीन द टू फेजेस, टू कर्व्स, इट इज लिक्विड एंड वेपर, और लोअर करके नीचे में और अपर करके ऊपर में वेपर है, सुपर हीटेड वेपर. ओके, and if I take the vapor and start cooling it, okay, so if I start cooling it from here and then the first drop of liquid will appear. So there is dew point here, and that's why it's called. And then when you go down, और यहाँ पर point B पर. So understand how this TXY diagram is represented. It is temperature on the y-axis and composition of liquid and vapor both on the x-axis. This TY diagram, the curve is TX diagram. That is why it is called TXY diagram. ठीक है, समझ में आया? सर Any questions? TXY सर diagram. वो सुपर कूल्ड लिक्विड एंड सुपर हीटेड वेपर का रिपीट कीजिए. Yeah. So when I take, suppose I take water, right? Water, if I take at say 0 degrees centigrade, or at this temperature, maybe it is 25 degrees centigrade. Just a minute, no?
Okay, can you hear me now? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Okay, okay. Yes, Network sir. issues. थोड़ा network issue है, let's see. मेरा iPad connect नहीं हो रहा है. Let me see if what I can do from PC. Okay, so you can see this now. Yes, sir. So what I was saying is, if you take this liquid at this composition x1, and if the temperature is say 25 degrees centigrade and start increasing the temperature, at some point the first bubble of liquid will form. There is a temperature T1, there is point B, and this is called the bubble point of this liquid. As we increase the temperature further, right, in this region between B and bubble point and dew point, it will be a mixture of liquid and vapor. जैसे अभी घर में पानी लिया, उबालना शुरू किया, तो पहला बबल यहाँ पर आएगा पॉइंट बी पर, बबल पॉइंट पर, और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, टिल इट बिकम्स बॉइलिंग पॉइंट, राइट. तो यहाँ तक लिक्विड और वेपर रहेगा और बाद में पूरा वेपर हो जाएगा एट पॉइंट एट डीपी. और ऊपर जो रहेगा उसमें ज़्यादा सुपर हीट हो जाएगा. सुपर हीट यानी इट इज मोर देन द टेम्परेचर ऑफ मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर. दैट्स व्हाट कॉल्ड superheated vapor. Okay, and if you take the same vapor and start cooling it, यहाँ से अगर टेम्परेचर कम किया, कम किया, कम किया, तो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड विल अपीयर एट दिस ड्यू पॉइंट, एंड वी स्टार्ट कूलिंग इट फर्दर. और कूल किया तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में, ड्यू पॉइंट बबल के बीच में, विल गेट अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर. लिक्विड बढ़ते जाएगा, राइट, एंड एट दिस पॉइंट विल गेट ऑल लिक्विड एट द बबल पॉइंट. So this is the region in which we have liquid and vapor both combined. Below this, it's only liquid. Above this is only vapor. And this point, this upper curve is actually temperature on the y-axis, and y, that is mole fraction in the y phase, vapor phase on the x-axis. That's why it's called Ty curve or dew point curve. And this lower curve, it represents temperature on the y-axis and liquid composition on the x-axis. That's why it's called Tx curve or bubble point curve. Is it clear? सर वो दोनों कर्व के मिडल एरिया में कौन सा फेज होगा? It's a both combination of liquid and vapor phase. अभी घर में जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप. बॉयल करना शुरू करो पानी, तो पहला बबल शुरू होगा मे बी अराउंड 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड. उसके बाद में और हीट करोगे तो और वो पानी कम होता जाएगा, वेपर बढ़ते जाएगा, राइट, इवेपोरेट हो जाएगा पानी. तो इट इज़ बेसिकली लिक्विड एंड वेपर बोथ. अगर हमने कंटेनर क्लोज सिस्टम लिया, पानी ओपन रहता है, राइट. जैसे प्रेशर कुकर लिया, प्रेशर कुकर को हमने गर्म करना शुरू किया पानी डाल के, तो धीरे धीरे पानी इवेपोरेट होता जाएगा और वेपर बढ़ते जाएगा, राइट. तो अंदर में जो रहता है प्रेशर कुकर में, लिक्विड एंड वेपर रहता है. लिक्विड की क्वांटिटी कम होती जाती है, वेपर क्वांटिटी बढ़ते जाता है. दैट्स व्हाट हैपेंस हियर, राइट. In this, between these two phases, it is a combination or mixture of liquid and vapor phases till it is completely vaporized at this point. And sir, what about tie line? I'll tell you about tie line. First understand Ty curve and Tx curve, then we'll see tie line. Ty Tx curve समझ में आया? Yes, sir. Okay, so if I take, Yes, sir. as we started with composition x1 of liquid, right, mole fraction of component A, this is x1, right, means component A, right, more volatile component. Suppose I take ethanol water mixture. So ethanol is, suppose say this is around 30%. 30% ethanol water लिया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, आई विल गेट अ बबल पॉइंट हियर, राइट. एक बबल इवापोरेट हो जाएगा, आई मीन अदर वेपर फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, राइट. बट इफ आई टेक दिस थिंग,
The composition, what will be the composition of the vapor? Composition of the vapor is, and drawing a horizontal line from this point on the right side till it hits a TY curve. Right? ये liquid का composition है. This is liquid composition, right? We start with the liquid and we are just increasing the temperature of liquid. But if I take this, जो vapor आ रहा है, suppose I have a closed system, and then whatever vapor is formed, I try to condense it. उसका liquid form किया, तो ये जो मिलेगा मेरे को, this is my vapor composition. So liquid composition x1 रहेगा, उसके equilibrium में composition y1 रहेगा. This is what tie line is. Tie line is connecting the liquid composition with the vapor composition. This liquid composition is on the Tx curve, vapor composition on the Ty curve, and horizontal line is connecting these two. That's what is called tie line. Tie line is connecting the liquid composition with the equilibrium vapor composition. Both are equal ना sir? Both are not equal. और Liquid का x1 है, vapor का y1 है. They are not equal. This is x1, this is y1. They are not equal. They'll never be equal. And that is how. then why y1 is great? Hello. That is what we are going to see. Why it is. That's what distillation works on. Vapor composition is always going to be more of the light component. Light component ऊपर जाता है, right? तो लो बॉइलिंग रहता है पहले evaporate होता है, जो हाई बॉइलिंग रहता है बाद में evaporate होता है, बराबर? And that is the principle of distillation. तो लो बॉइलिंग, if I take ethanol water, पहले इथेनॉल evaporate होना शुरू करेगा, बाद में वाटर evaporate करना शुरू होगा. If I take methanol water, first methanol will start evaporating, then water will start evaporating because methanol is low boiling, temperature is less. तो उसका जो ज़्यादा evaporate होगा, बाद में methanol हो जाने के बाद थोड़ा बाद में water evaporate होना शुरू हो जाएगा. That is why the vapor is always richer in the light component. Richer means composition of the light component is more in the vapor phase than in the liquid phase. And that is the principle of distillation. उसी की basis पर हम separation करते हैं distillation में. Understood? सर वो y1 का बताओ ना फिर से. Why y1 is greater than x1? Why y1 is basically observation. We are trying to correlate what is observed. If I take a liquid mixture of methanol and water, कौन सा पहले boil होगा? पहले क्या boil होगा? Ethanol. इथेनॉल. वाटर लिया तो मिथेनॉल, राइट? तो जो वेपर रहेगा, वेपर में मिथेनॉल ज़्यादा रहेगा कि वाटर ज़्यादा रहेगा? Methanol. राइट. दैट इज वाई वेपर कंपोजिशन, वेपर जो रहेगा उसमें जो मिथेनॉल ज़्यादा रहेगा, वाटर कम रहेगा, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ मिथेनॉल. इफ यू टेक मिथेनॉल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथेनॉल इज हाउ मच? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथेनॉल? It is about 65 degrees centigrade. What is the boiling point of ethanol? So about 78 degrees centigrade. So if I take methanol water, so at 65 degrees centigrade or even less than that, the first bubbles start appearing. और धीरे 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 बढ़ते जाएगा till it appears 65. ये 65 नहीं रहेगा, कम ही रहेगा, ये रहेगा 65 करीब, around that. It's not exactly boiling point, but it is close to that. So between say 55 degrees centigrade and 65 degrees centigrade ये liquid and vapor रहेगा. So when it starts boiling, पहले methanol evaporate होगा because that is low boiling. So vapor में methanol ज़्यादा रहेगा, ethanol water कम रहेगा. So if I take that vapor and condense it, right? So condense किया तो उसका composition will be same as the vapor, right? Liquid का. So that is the composition of the vapor. Or if I condense it, that is the composition of liquid by condensation. It will always be more than x1 in the more volatile component. That's why we are plotting a more volatile component. Less volatile component में उल्टा हो जाएगा, वाटर का कम रहेगा इसमें वेपर में देन इन द लिक्विड. समझ में आया? Yes sir. Okay.
So tie line is connecting. If I take Sir. liquid and vapor, the tie line is the composition or connecting line between the liquid composition and the vapor composition in equilibrium. When the liquid and vapor are in equilibrium, the tie line is connecting the liquid composition x1 with the vapor composition y1. The horizontal line is always called tie line. Okay. सर हेलो Yeah. सर हम जब सुपर हीटेड वेपर से नीचे आते हैं कूलिंग कंडेंसेशन करते हैं वो सर वो सेम स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है क्या मतलब सर सुपर We are just reducing the temperature. We are not doing anything. Condense कुछ नहीं होने वाला. Condense dew point पर ही होने वाला है वो. सर We are just reducing the temperature. When I take a superheated vapor and start reducing the temperature, it will start condensing only at dew point. उसके पहले कुछ नहीं होगा. उसके पहले सिर्फ टेम्परेचर ही रिड्यूस हो रहा है. जैसे यहाँ से मैंने लिया सब कूल्ड लिक्विड को, इट इज ओनली इंक्रीजिंग टेम्परेचर. बॉयल नहीं हो रहा है. बॉयल होगा, शुरू होगा ओनली एट बबल पॉइंट. और सर वो और हम एक कंपोनेंट का एट सेम टेम्परेचर लेते हैं तो वो y1 x1 से ग्रेटर होता होगा ना यस, y1 x1 से ग्रेटर होगा फॉर मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट. That's why we are plotting only more volatile component. We are not plotting less volatile component. जो more volatile है उसका ही composition ज़्यादा रहेगा वेपर में. Less volatile का उल्टा होगा यानी कम होगा. Because less volatile is always at the bottom. जो हमने देखा था distillation column में, right? पर सर आफ्टर 10 मिनट क्या के बाद क्या होगा? धीरे धीरे हो जाएगा, चेंज होगा, बट इट्स नॉट गोइंग टू चेंज. ऑलवेज इट्स गोइंग टू बी मोर वेपर का. ये देखा था हमने, राइट? इफ यू सी दिस, लेट मी सी, ये देखा राइट? ऊपर में जो आता है डिस्टिलेट इज ऑलवेज मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट, और नीचे में जो आता है इट इज लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट. यही बेसिस है सेपरेशन का. वेपर में मोर वॉलेटाइल ज़्यादा रहता है, लिक्विड में लेस वॉलेटाइल ज़्यादा रहता है. एंड दैट इज द बेसिस ऑफ ऑल डिस्टिलेशन सेपरेशंस. सर सर टाइम जैसे बढ़ता जाएगा वैसे डिस्प्लेट में x1 कम होता जाएगा ना हेलो When we do distillation, we always look at steady state. We are not looking at dynamic. We are talking about time. जब बढ़ेगा तो time, all equipment is operated at steady state conditions. जितना भी होता है केमिकल इंजीनियरिंग में, we always operate only start. जब नया प्लांट चालू करते हैं तो maybe it takes 1 or 2 hours for it to come to steady state. That is the only time when this will change, keep changing. But once I reach a steady state, the composition of the distillate will be constant, composition of the bottom product will be constant. It's not going to change with time. All plants are operated at steady state. Only during startup and shutdown, जब हम बंद करते हैं प्लांट, तब अनस्टेडी स्टेट रहता है. सर बट जब भी कुछ प्रोसेस होती है तो उसमें जनरेशन और एक्यूमुलेशन टर्म रहती है ना, तो फिर वो किस स्टेडी स्टेट में आएगा? That's what I'm saying. It takes little time for it to study steady state. That you'll study in PDC in final year. How much time it takes to come to steady state and all those things you'll study in PDC. That's not the subject of this thermo. Yes, सर it takes time. एक क्वेश्चन है कि अगर एमवीसी और एलवीसी देखे कि लो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट, लेकिन जैसे जैसे अगर सेम टेम्परेचर पे अगर हम देखें तो जैसे टाइम बीतता जाएगा तो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट भी वेपर फेज में जाता ही रहेगा ना एट ऑल टेम्परेचर, तो उसका कंपोजिशन भी बढ़ता जाएगा ना एक पॉइंट के बाद. अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. या आपको समझ में आ रहा है नीचे वाला क्या दिखाया था मैंने डिस्टिलेशन कॉलम? हाँ सर. इसमें एक रिफ्लेक्स आता है, राइट? देयर इज अ रिफ्लेक्स हियर कमिंग इन हियर. लिक्विड आ रहा है, वापस आ रहा है, वेपर आ रहा है. ये दोनों का इक्विलिब्रियम होता है. इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज, वी आर टॉकिंग अबाउट मास ट्रांसफर टिल स्टेडी स्टेट इज रीच्ड. ओके.
जो अगर हम देखें यहाँ पर कंपोजिशन ऑलवेज सेम रहेगा एट स्टेडी स्टेट। इनिशियली व्हेन आई स्टार्ट फीड एंड जैसे ऊपर आएगा लिक्विड कंडेंस होगा, जब तक ये वापस आएगा इक्विलिब्रियम आने के पहले अनस्टेडी स्टेट रहेगा। बट वंस दिस लिक्विड इज स्टडी फ्लो रहेगा, इसका स्टडी फ्लो इसका रहेगा, स्टडी फ्लो इसका रहेगा, then all the composition will be same throughout the column. It's not going to change. Dynamics is only for startup and shutdown of the plant. अगर एक plant है, refinery ले रहे, refinery runs for 365 days a year. Startup is maybe only half an hour or 1 hour point. After that it is all steady state. Okay. जब तक स्टडी स्टेट आएगा तब तक या चेंज होते जाएगा, बट वंस दिस दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग रिफ्लक्स टू गेट अ स्टडी स्टेट। अल्टीमेटली हमारे को ये वेपर और लिक्विड कांटेक्ट कर कर एक स्टडी स्टेट लाने का है। इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं ना हम, इक्विलिब्रियम, बट उसके बाद स्टडी स्टेट भी चाहिए हमारे को। इफ द कंपोजिशन कीप्स चेंजिंग आई डोंट गेट अ डिजायर्ड प्रोडक्ट। इफ आई वांट से मिथनॉल 98%, अगर ये कंपोजिशन चेंज होता रहेगा देन द प्रोडक्ट इज ऑफ नो यूज टू मी। I have to sell 98% in methanol, right? तो कैसे होगा? Unless I reach a steady state, I should get this distillate concentration always the same. Then only this distillate is useful to me. If this distillate concentration keeps changing, then it's of no use. I cannot sell it. समझ में आया बात? Yes, sir. That's why all the reactors, all the unit operations are operated always at steady state, because you want constant output or constant product composition. रिएक्शन जो हो रहा है, रिएक्शन में भी ऐसी होगा। विल सी, यस डायनामिक्स देखते हैं, बट दैट इज ओनली ड्यूरिंग स्टार्टअप एंड शट डाउन, जब हम चालू करते हैं और जब बंद करते हैं, राइट? लाइक व्हेन यू स्टार्ट अ बाइक चालू किया, राइट? व्हेन यू गो इनटू फर्स्ट गियर स्पीड कम रहता है, देन यू गो इनटू सेकंड गियर स्पीड ज़्यादा रहता है, यू गो टू थर्ड गियर और स्पीड ज़्यादा रहता है, राइट? देन यू गो टू फोर्थ गियर एंड देन स्टडी स्टेट रहता है, राइट? सो हाउ लॉन्ग इज योर अनस्टडी स्टेट? Unless there is traffic signal, suppose you are driving on a highway, कितना टाइम लगता है फर्स्ट गियर से फोर्थ गियर में जाने के लिए, थर्ड गियर में जाने के लिए? कम समय लगता कम समय लगता है। उसके बाद इफ देयर इज स्मूथ रोड, देयर इज नो डिस्टर्बेंस, यू नो, अल्टीमेटली अनस्टडी स्टेट इज ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस ओनली, राइट? अगर आपका हाईवे पे चला रहे हो, स्मूथ रोड है, देयर इज नो ट्रैफिक और लेस ट्रैफिक एंड यू आर ड्राइविंग कंटिन्यूसली एट कांस्टेंट स्पीड, राइट? तो क्या हो जाएगा? यू सी इन सेम गियर स्टडी स्टेट में चला सकते हो आप, अनलेस देयर इज अ सिग्नल, अनलेस देयर इज अ डिस्टर्बेंस। होता है प्लान में भी डिस्टर्बेंस आता है, देन यू हैव टू सी हाउ टू ब्रिंग इट बैक टू स्टडी स्टेट, बट यू ऑलवेज ऑपरेट एट स्टडी स्टेट बिकॉज दैट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी। स्टडी स्टेट डजंट गिव यू मैक्सिमम एफिशिएंसी। आपका जो पेट्रोल रहता है, यू व्हाई डोंट यू ड्राइव इन सेकंड गियर? बाइक व्हाई डोंट ड्राइव इन सेकंड गियर? वो ज्यादा पेट्रोल खाता है। ज़्यादा पेट्रोल खाता है, एफिशिएंसी कम रहता है, राइट? फोर्थ गियर में एफिशिएंसी ज़्यादा रहता है, सो ऑलवेज ड्राइव एट हायर स्पीड। सो दैट्स व्हाट प्लांट में हमारे को आउटपुट चाहिए, कांस्टेंट आउटपुट चाहिए। जो प्रोडक्ट बेचना है मेरे को, इफ आई वांट टू सेल 99% 98% मिथनॉल, there's no point in having 70% 80% methanol, and that continuously changes. Yes, during the startup it will change, but that's why we put reflux back and give it time, then it becomes steady state. It takes time, yes, 1 घंटा 2 घंटा लगेगा। सर वो वही रेसिडुअल टाइम ना? हाँ, सर वो रेसिडुअल टाइम जो होता है ना, उसके बारे में रेजिस्टेंस टाइम इज फॉर रिएक्शन, डिस्टिलेशन के लिए रेजिस्टेंस टाइम देता है। बट या वी डू यूजुअली क्या होता है, व्हेन यू स्टार्ट दिस थिंग वी हैव टोटल रिफ्लक्स, प्रोडक्ट नहीं निकालते हैं। जब वन स्टडी स्टेट होता है ना, डोंट टेक आउट डिस्टिलेट बिकॉज एक डिस्टिलेट कंपोजिशन चेंज होते जाएगा। सो व्हाट दे डू इज दे ऑपरेट एट टोटल रिफ्लक्स, पूरा जितना भी लिक्विड आएगा उसको वापस डाल देंगे टिल इट रीचेज स्टडी स्टेट। प्रोडक्ट बॉटम प्रोडक्ट भी नहीं निकालते हैं, पूरा वापस यहाँ से डिस्टिलेट वापस डालते हैं रिफ्लेक्स करके, और यहाँ से पूरा रिबॉयलर वापस डालते हैं ऊपर टिल इट रीचेज स्टडी स्टेट। एक स्टडी स्टेट आ जाता है, देन यू स्टार्ट विदड्रॉइंग द डिस्टिलेट एंड बॉटम प्रोडक्ट, और बाद में कंटिन्यू कर रहेगा।
समझा क्या? There's no हाँ point in सर अभी getting, समझ there's no point in getting a distillate methanol which is 60%, 50%, 70% continuously changing. Throw it, I have to throw it away, right? इसलिए उसको वहाँ पर ये distillate नहीं देते हैं यहाँ पर. You don't take it out here. It's not taken out. Initially there is no distillate. There is no bottom product. Everything is sent back here. Everything is sent back here till it reaches steady state. Once it reaches steady state, composition change का यहाँ पर measurement रहता है. You can measure the composition कितना आ रहा है, and if it is constant, then you take out the distillate and bottom product. ठीक है, समझ में आया? यस सर. Okay. तो So let us फ्लैश डिस्टिलेशन में पूरा का पूरा वेपर ऊपर आ जाए ना एक ही बार में. फ्लैश डिस्टिलेशन में पूरा नहीं आता है. फ्लैश इज ऑलवेज व्हेन यू से यहाँ पर भी फ्लैश होता है. व्हेन आई पुट feed into this distillation column, the pressure of the feed is more, pressure in the column is less. तो क्या होता है यहाँ पर मैंने बताया, तो light component gets vaporized, heavy component becomes liquid. तो separation हो जाता है. It becomes like one stage of distillation column. यहाँ पर separation आता है, जो light component vapor हो जाता है, जो heavy component का liquid हो जाता है. पूरा vaporize नहीं होता कभी. Because heavy component cannot get vaporized, so उसको vaporize करने के लिए latent heat चाहिए रहता है. So it takes latent heat from the heavy component and vaporizes. Only light component vaporizes flash में. ठीक है? Okay, so let's proceed further. TXY diagram समझ में आया अभी? सर Yeah. Sir, bubble point to dew point temperature is increasing, but boiling occurs at constant temperature. No, boiling occurs at constant temperature only for a pure liquid. There is no boiling point of a mixture. If I take methanol water system, there is no boiling point. Boiling point is only for methanol, pure methanol and pure water. You'll never get a boiling point for a solution. For a solution, there is always a dew point and a bubble point. And it evaporates between the dew point and bubble point. Understand this simple thing. There is no bubble boiling point of a solution. When there are two components, there is no boiling point. Boiling point is always for a pure component. So this bubble point is first bubble of more volatile component forming, which is not corresponding to boiling point. And the boiling point of A is this. यहाँ देखा, right? देख रहे हो आप यहाँ पर boiling point of A कहाँ पर है? यहाँ पर है. Yes, sir. This is the boiling point of A, and this is the boiling point of B. Dew point and bubble point is nowhere near the boiling point of pure A and pure B. It is somewhere in between boiling point of A and boiling point of B. And vaporization happens only between boiling bubble point and dew point. There is no fixed boiling point of a solution. Does that answer your question? Yes, sir. Got it. Okay. सर Yes. तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा एक वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों होगा वो नहीं समझ रहे. ये suppose ये X ये लिया हमने, right? This is mole fraction of A, more volatile component. बराबर? So when it is 1, Yes. what does it Yes, mean? sir. When mole fraction is 1, what does it mean? टोटली प्योर. So pure A, right? That means it is only A. यहाँ पर B कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? This is the boiling point of A. समझ में आया? यस सर. यस सर. यहाँ पर if you see X is 0, that means X of A is 0. Mole fraction of A is 0. तो mole fraction of B क्या हो जाएगा? प्योर. Pure B हो जाएगा. That is boiling हाँ. point of B here. समझ में आया? Yes, sir. Why this is boiling point of A? Why Yes, this is sir. boiling Yeah. point of B?
and boiling point of a solution will always be, कोई भी solution लो, if you take this composition, boiling point is going to be between, the liquid is going to boil between these two temperatures, which is always going to change. This bubble point and dew point will always depend on the composition of the liquid. यहाँ पर ये composition, बबल पॉइंट यहाँ पर है, ड्यू पॉइंट यहाँ पर है. यहाँ पर अगर कंपोजिशन चेंज कर दिया तो बबल पॉइंट यहाँ पर है, ड्यू पॉइंट यहाँ पर है. इधर किया तो इधर अलग हो जाएगा, बबल पॉइंट यहाँ पर है, ड्यू पॉइंट यहाँ पर है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द composition of the solution. Bubble point and dew point is a function of mole fraction of component A and component B. It is not fixed, just not, it's not like water. Water का boiling point is always 100 डिग्री सेंटीग्रेड at 1 atmosphere. Solution के लिए वैसा नहीं होता है कुछ. समझ में आया? यस सर. और सर वो थ्रू आउट प्रेशर कांस्टेंट होगा ना? Pressure, we are always operating at constant pressure. We are saying pressure is constant. Temperature is changing because composition is changing. We are keeping pressure constant. So that is why it is TXY diagram. When I say TXY diagram, it is at always constant pressure. Temperature is changing, X is changing, Y is changing, but pressure is constant. ठीक है? That is why we say, you know, जैसे हमने बोला डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आया था, राइट? We saw that for binary system F is equal to 2. Pressure एक specify कर दिया हमने, pressure equal to constant बोल दिया, right? Now if I specify X, everything else is fixed. Because if I take X, I know Y also from this diagram. I don't need to specify Y. X लिया, Y मिल गया मेरे को. Y लिया, X मिल गया मेरे को. समझा कि नहीं? Yes sir. Okay. So now if you take this thing, I am taking this tie line, say DEF, right? तो यहाँ पर and suppose my composition is X1, liquid composition X1, और ये tie line लिया मैंने, okay, and if the point is suppose here, suppose the temperature of this mixture is T2, right? So I can draw a tie line here, right? I'll get because this is a vapor liquid mixture, right? ये region में जो बीच का region है, यहाँ पर almost pure liquid है, यहाँ पर almost pure vapor है, but इस दोनों के बीच में it is a mixture of liquid and vapor, right? If I take this what you call vapor, it will give me liquid of composition X and vapor of composition F in this region. जैसे टेम्परेचर बढ़ते गया, राइट? यहाँ पर बबल पॉइंट से और बढ़ाया टेम्परेचर मैंने. सो आई गेट अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर एंड लिक्विड कंपोजिशन विल बी गिवन बाय डी. ये कंपोजिशन रहेगा इसका, यहाँ से सॉरी इसका कंपोजिशन ये रहेगा और वेपर कंपोजिशन ये रहेगा, राइट? So in this region it's going to be a mixture of liquid and vapor, and the amount of liquid by amount of vapor is essentially EF, again lever arm principle, EF upon DE between these two bubble point and dew point, because it's a mixture of liquid and vapor. यहाँ पर प्योर लिक्विड है, यहाँ पर प्योर वेपर है, यहाँ इन दोनों के बीच में जो रहेगा, at any point at any temperature it will give me a mixture of liquid and vapor. लिक्विड यहाँ पर कंपोजिशन रहेगा, वेपर यहाँ पर कंपोजिशन रहेगा, क्वांटिटी विल बी amount of liquid will be proportional to EF, amount of vapor will be proportional to DE. ठीक है, समझ में आया? Any doubts, questions on TXY diagram? सर इन दोनों के बीच में हमारा फीड पॉइंट होगा. क्या बोल रहे हैं? फीड पॉइंट एक्सेप्ट कहाँ पर होगा?
क्या? XF एक्सेस? मोल फ्रैक्शन ऑफ फीड। सर अरे वही बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर मैंने लिक्विड लिया, सपोज आई टेक x1 का मोल फ्रैक्शन का लिक्विड लिया, राइट, एंड आई स्टार्ट इवेपोरेटिंग इट at the bubble point. First bubble will form, right? If I increase the temperature further, it is now in this region between bubble point and dew point. It is a mixture of liquid and vapor. ये दिख रहा है? It is a mixture of liquid and vapor. It is not pure liquid, it is not pure vapor. It's a mixture of liquid and vapor. So if I take any point here on this curve, on this line, vertical line of this same composition, and the temperature is T2 because temperature बढ़ते हैं, right? यहाँ पर T1 था, बढ़ के T2 हुआ और bubble point T3 है, right? So if I take any temperature T2, वो temperature पर ये जो हमने feed start किया था उसका क्या होगा? It will be a mixture of liquid and vapor, and that is composition of liquid is given by tie line. यहाँ से लिया मैंने, horizontal line draw किया मैंने E से, तो जो Tx का को इंटरसेक्ट करेगा बबल पॉइंट को, दैट विल गिव मी द लिक्विड कंपोजिशन, और Ty कर को जो इंटरसेक्ट करेगा that will give me the vapor composition. So it is mixture of this liquid and this vapor. Okay, sir. And the ratio of amount of liquid to vapor is given by line EF. जो ये वेपर इस वेपर साइड में है वो लाइन EF, एंड लिक्विड के वेपर के लिए टुवर्ड्स T, लिबोराम प्रिंसिपल के हिसाब से. Okay. Any questions on this? Okay, there are no questions. It's already 12:30, so we'll have to stop now. Next is equilibrium diagram. We'll see that tomorrow or on Monday, next Wednesday. And Monday you have your test. Be prepared. And I have given assignment also. Are you able to see the assignment on Google Yes, sir. Classroom? Right. So each person has to solve at least one question from Unit 1 and one question from Unit 2. वो ग्रुप्स दिया है मैंने, ग्रुप्स का भी डाला है वहाँ पर मैंने एक PDF. I think it is 1 to 9 is group 1. It's a 8-9 लोग का एक ग्रुप बनाया है. So question number 1 for 8 to 9 people, question number 2 for 8 to 9 people. Like that you have to submit. Solve it on your notebook, make a PDF or scan and submit it on Google Classroom. And the last date for submission is Monday again. It will help you to prepare for exam also. Unit 2 के question आपको exam में आ सकते हैं. The exam is going to be subjective. It will have numerical. It will have some derivations also. Any questions on exam or what we did today? Okay, so there are no questions. Good luck for the exam and see you on Monday at 2:45. We'll meet again on Microsoft Teams, but exam will be on Google Classroom. Okay.